Good morning, beta. So last day for the revision of your NEET. So tomorrow you are going to write. By this time you'll be getting ready for your NEET examination. Chalo, we'll try to discuss some of the important questions related to the topics which we have been already revised. And heat and thermodynamics, modern physics, wave optics, fluids and dimensions. ये वाले questions एक बार देख लेते हैं. We'll try to see that. We'll try to do at least 5 test papers so that all the questions एक बार आप roughly revision हो चुका है. Question number 1 optics का है. Question number 2 is electrostatics. Question number 3 is kinematics. Question number 4 is again ray optics. Question number 5 is circular motion. Question number 6 is the incident photon involved in the photoelectric experiment completely disappears, comes out with increased frequency, comes out with a decreased frequency, comes out with the change in your frequency. What will be the answer for this one, beta? The incident photon involved in the photoelectric effect. याद है photoelectric effect में क्या होता था? When a ray of light is being incident on this one, isn't जैसे आप इंसिडेंट कर रहे हो तो दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन E is equals to h into nu. ये जो करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है ना, इसको एक्साइट करेगा तो इसकी की पूरी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा या थोड़ी देगा, उसके हिसाब से ये एक्साइट होगा और ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है. अगर कंप्लीट कोलिजन है समझे, जितनी एनर्जी आपने दी उतनी एनर्जी से बाहर आ जाएगी, तो फोटोन की एनर्जी कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगी. इंसिडेंट फोटोन इन्वॉल्व इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो जाएगा बेटा? फोटोन के बारे में पूछ रहा है, बाहर जो निकलेगा दैट इज इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन. इंसिडेंट फोटोन बोल रहा है यहाँ पर, वो इंपॉर्टेंट है. इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी जो है ना कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगी एंड दैट विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द इंसिडेंट एनर्जी फॉर योर फोटो इलेक्ट्रॉन. सो द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस वन इज 1. चलो क्वेश्चन नंबर 7. The number of silicon atoms per meter cube is 5 into 10 to the power of 28. हाँ सर, वो अगर फोटोन पूरा डिसअपियर हो जाता फिर जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता ना सर, तो वो फ्रीक्वेंसी सेम रहती उसकी. ये जो बाहर निकल रहा है ना, इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं ना बेटा. हाँ, फोटो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है. अगर इलास्टिक कोलिजन होगी देन इट विल बी सेम, लेकिन जनरली इट विल लूज सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन इट इज हिटिंग दिस वन. ठीक है ना? तो जो बाहर निकल रही है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉट अ फोटोन, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. फोटोन अलग है, इलेक्ट्रॉन अलग है ना बेटा, दोनों की फ्रीक्वेंसी विल बी डिफरेंट. यस सर, यस. तो सर डिक्रीज रहती ना फ्रीक्वेंसी, इसकी वजह ये तो पूरा लॉस कर जाके इसकी एनर्जी पूरी फोटो इलेक्ट्रॉन को देगा. तो वो फोटो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आप तो को थोड़ा एक्साइट करेगा, देन इट विल कम आउट विद अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी एंड आउटवर्ड. यानी इंसिडेंट अगर 10 दिया आपने तो शायद ये 8 से बाहर आ जाए. ओके सर, ओके. ठीक है, क्योंकि वर्क फंक्शन थोड़ा एनर्जी लेंगे ना. यस सर, यस यस. फोटोन पूछ रहा है यहाँ पर, फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं. इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, दैट विल बी टोटली बीन ट्रांसफर्ड टू द इलेक्ट्रॉन. यस सर, यस. क्वेश्चन नंबर 7. The number of silicon atoms per meter cube is 5 into 10 to the power of 28. This is doped simultaneously with 5 into 10 to the power of 22 atoms per meter cube of arsenic and 5 into 10 to the power of 20 per meter cube atoms of indium. Calculate the number of holes. Given that intrinsic semiconductor value is 1.5 into 10 power 16 per meter cube in the material N type, is the material N type or right now for me P type? So what is the answer beta? कौन सा material है right now? The number of silicon atom per meter cube is 5 into 10 to the power of 28. This is doped simultaneously with 5 into 10 to the power of 22 atoms per meter cube of arsenic, isn't it? The number of electrons जो आएंगे इसके अंदर, what will be the number of electrons beta? एक मिनट. हाँ बोलो जल्दी से. The number of silicon atoms are given for me 5 into 10 to the power of 28. It is been doped with simultaneously 5 into 10 to the power of 22 atoms per meter cube of arsenic and 5 into 10 to the power of 20 per meter cube atoms of indium. ठीक है ना? तो number of electrons कितने हो जाएंगे बेटा? आपने डोप किया 2 से, so it is 5 into 10 to the power of 22 minus 5 into 10 to the power of 20. यानी this value will become how much बेटा? अगर 22 को अगर मैं कॉमन करूं, this will be 5 minus 0.05 से मल्टीप्लाई करो इसको, into यहाँ पर 10 power 22 कॉमन मिल जाएगा.
number of holes होना, you know that number of intrinsic square will be equal to number of electrons into number of holes. So the number of holes मतलब NH is equals to Ni square divided by your N into your E. So Ni square मतलब कितना है बेटा? NH will be equal to Ni square. Ni की वैल्यू कितनी है? 1.5. This is 1.5 into 10 to the power of 16 का whole square divided by number of electrons. It is 5 minus 0.05 मतलब 4.95 into 10 to the power of 20. तो देखो कितना आ रहा है. This is simplify कर रहे हैं, will be getting 4.54 into 10 to the power of 9 per meter cube. That means number of electrons are greater than number of holes. So the material will be your N type. Done. Direct formula based question बेटा. यहाँ पर बस इतना याद रखना था, when it is being doped with your 5 into 10 power 22 atoms and arsenic, isn't it? And as well as of your indium. तो इन लोगों का जो है ना डिफरेंस लेना, so number of electrons जितने मिलेंगे उसके अंदर. ठीक है? एट वन देखो. What will be the input A and B for the Boolean expression A plus B, and this one is your A dot B. ये G कहाँ से आता है? G नहीं होगा शायद. What will be the input A and B for the Boolean expression A plus B bar and A dot B bar is equals to what? ये डॉट होगा, ये प्लस ले लो बेटा. अगर दोनों को मैं 0 और 0 दे रहा हूँ इनपुट, if 0 और ये 0, यानी 0 का नॉट विल बी इक्वल टू 1, isn't it? और इसको भी 0, तो आउटपुट विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1. डन. सर आप 7th क्वेश्चन जरा एक बार समझा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में डायरेक्टली बेटा मैं सेमीकंडक्टर्स कराते खुद भी 3-4 बार कराया मैं तुमको. नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स दे रखा है अपने पास 5 into 10 to the power of 28 एंड इसको डूब करा गया हुआ है. सो किससे? एक तो आर्सेनिक से और एक एनडीएम से. एंड इज आस्किंग अस टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ होल्स. और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मेरे पास कितना है? 1.5 into 10 to the power of 16. So we know that intrinsic semiconductor will be equal to number of electrons into number of holes. So it is Ni square into your N into your H. ये अपना फॉर्मूला है बेसिकली, isn't it? अब जब डूप कर रहे हैं तो आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी ना. डोपिंग कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना चेंज हो रहे हैं? जब आप आर्सेनिक से किया और इंडियम से किया तो इन दोनों का डिफरेंस दैट विल गिव मी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ होल्स अपने को निकालना है. इंट्रिंसिक की वैल्यू आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम में दे रखा है, Ni की वैल्यू दे रखा है. Ne की वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस विल गिव मी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर कंडक्टिविटी के लिए रिस्पांसिबल होता है. तो नंबर ऑफ होल्स निकाल दो. ओके सर. Question number 9 देखिए बेटा. Which of the following, what is the ratio of the forward and reverse resistance of the PN junction diode? What is the ratio of forward and reverse resistance of the PN junction diode? आया? फॉरवर्ड रेसिस्टेंस मतलब पॉजिटिव ना बेटा. रेशियो ऑफ फॉरवर्ड रेसिस्टेंस, दैट ऑफ रिवर्स रेसिस्टेंस. रेशियो ऑफ फॉरवर्ड रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ योर रिवर्स रेसिस्टेंस. फॉरवर्ड रेसिस्टेंस मान के चलो एज पर द ऑप्शंस अगर मैं देख के चला, अगर ये 10 ले रहा हूं मैं बेसिकली, दिस शुड बी टेकन एज ऑफ योर 10 to the power of your 5. तो ये बन जाएगा मेरे को 10 power minus 4:1.
डन। सर 10 पावर 5 कैसा ले रहे हैं आप? फॉरवर्ड रेसिस्टेंस में पॉजिटिव है ना बेटा, रिवर्स रेसिस्टेंस में मतलब नेगेटिव। हाँ रिवर्स 10 to the power of 5 कैसा ले रहे हैं सर? कुछ भी लेते हैं, डिपेंड ऑप्शन भी ले सकते हैं, या आप ऐसे भी ले सकते हैं 10 divided by 10 power 3, so that will be equal to how much will be 10 power minus 2 is to 1, यस सर। isn't it? अब दोनों में अपने को बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बिकॉज रिवर्स रेसिस्टेंस मतलब सबसे कम ये दोनों में, so 10 power minus 4 is more resistive, more reverse compared to the 10 power minus 2. यस सर, फर्स्ट ऑप्शन। Logic question. In a common base circuit, the current gain is 0.96. If the base current is 60 microampere, find the emitter current in this one. Direct question है, करोगे आप लोग इसका? Common base circuit है, यानी अल्फा, अल्फा is equals to output current divided by input current. Input current क्या हो जाएगा बेटा? Common emitter, common base के लिए input will be equal to how much? Base common है ना, तो input will be emitter. And we know that IE is equals to IC plus of your IB. तो IC की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? IE minus IB base का divided by IE. Done. पूछ रहा क्या पर? Find the emitter current. And IE is equals to how much? In a common base circuit, the current is given for me how much will be? 0.96. यानी अल्फा की वैल्यू है 0.96. 0.96 is equals to 1 minus, this will be equal to base current divided by emitter current, isn't it? That is alpha is equals to 1 minus IB divided by your IE. Is asking the emitter current, that means IE. Find the emitter current. कितना रहा? Base current is given as 60 microamperes बेटा. Alpha is also given for me 0.96 is equals to 1 minus base current is 60 into 10 to the power of minus 6 divided by emitter current. इसको simplify कर लो, that will give me the emitter current. Formula clear है? Question number 11 बेटा, याद है किसी को? Suppose the gravitational force varies inversely as the nth power of the distance. Then the time period of the planet circular orbit of radius r around the sun will be proportional to your how much?
क्या होगा बेटा 11th में? Gravitational force varies inversely as the nth power of the distance. Then the time period of the planet in the circular orbit of radius r around the sun will be equal to how much? Gravitational force must be balancing your centripetal force. Gravitational force मतलब capital G, capital M, small m divided by your r square and to the power of inversely proportional to nth power है तो ये हो गया r to the power of n. That will be equal to your m into v square divided by capital R. ठीक है ना? तो इसमें से मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ. ये स्मॉल m गेट्स कैंसिल, तो ये बन गया मेरे पास कैपिटल G. This one will be capital M into your R divided by your R to the power of n is equals to v square. ठीक है ना? तो v square की वैल्यू कितनी आ रही है? V square is equals to under root of your, this will be capital G, capital M divided by your ऊपर चले जाएगा तो r पावर माइनस n हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, r कॉमन हो जाएगा, दिस विल बी योर पावर ऑफ n माइनस 1. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई, ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाय योर r. तो t वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 पाई इनटू योर r डिवाइडेड बाय वेलोसिटी. वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ योर g इनटू m हो गया यहाँ, और दिस विल बी अंडर रूट ऑफ योर r टू द पावर ऑफ n माइनस 1 के बराबर हो गया. यानी दिस विल बी इक्वल टू t इज इक्वल्स टू 2 पाई इनटू कैपिटल R अंडर रूट ऑफ योर g इनटू योर m. ये बन जाएगा r है, r टू द पावर ऑफ दिस वन, यानी ये बन जाएगा मुझे n पावर 1/2 है ना बेटा, पावर 1/2 मतलब दिस विल बी इक्वल टू r कॉमन हो जाएगा, दैट इज r to the power of n minus 1 divided by 2. Done. Sure. 12th one आया किसी को? The true table for the following combination of the logic gate as shown in the figure is A and B है. So this one is your gates. बताइए कौन सा भी ट्राई करके. So what will be the answer for this one? Anyone? The true table for the following combination will be equal to how much? OR gate and gate. इसका इनपुट है A और B. फरहान बताओ. Juveria. ट्वेल्थ वन का बताइए आंसर भाई. The true table for the following combination of the logic gates will be equal to how much? क्या गेट आ रहा है आप अपनी तरफ से करिए. These are the options given for us. ये भी इनपुट ये होगा, इसका आउटपुट जो होगा ना लाइक वाई डैश, इसका आउटपुट हो जाएगा.
फोर्थ ऑप्शन आ रहा, वेरी गुड। देखो y डैश विल बी इक्वल टू मच बेटा, y डैश इज इक्वल टू योर a प्लस b हो जाएगा, और y वैल्यू विल बी इक्वल टू, ये कौन सा गेट है मेरे पास, ये एंड गेट है, एंड दिस वन इज योर और गेट। और गेट के लिए a प्लस b, एंड गेट के लिए y इज इक्वल टू योर, ये कितना हो जाएगा, इनपुट इज योर a डॉट, दिस विल बी इक्वल टू मच y डैश। डन। इसका ट्रू टेबल क्या हो जाएगा बेटा, y डैश का ट्रू टेबल क्या हो जाएगा बताइए, y डैश का ट्रू टेबल a b y लिख रहे हो, तो ये 0 0, तो ये 0 हो जाएगा। The next one is 0 1, this will be equal to 1, 1 0, this will be equal to 1, then 1 1, this will be equal to 1, y dash, isn't it? तो y के लिए इनपुट क्या है बेटा, y के लिए एक इनपुट है ये, अनदर वन इज b, कितना आएगा 0 0 0 1 डॉट भी आएगा ना बेटा, वेरी गुड, फोर्थ ऑप्शन विल बी द आंसर फॉर दिस। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट वन, A radioactive nucleus can decay into two fragments. मेरे पास ये radioactive nucleus है, it is decaying into two fragments, एक छोटा fragment, एक fragment. The mean value period for the first process is T1, यानी half mean value दे रखा है, tau1 की value T से represent करा है और tau2 की value T2 से represent करा हुआ है. For the second process it is T2. The effective mean life period for the two processes will be equal to how much for me? देखो डीके कांस्टेंट जब हो रहा है ना बेटा, इसका एक डीके कांस्टेंट हो जाएगा लैम्डा 1 और इसका एक डीके कांस्टेंट हो जाएगा लैम्डा 2। इफेक्टिव डीके कांस्टेंट मतलब कितना हो जाएगा बेटा, लैम्डा विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, और लैम्डा को मैं हाफ लाइफ में लिख सकता हूं ना बेटा, व्हाट इज एन हाफ लाइफ राइट नाउ फॉर मी, दिस वन इज राइट नाउ फॉर मी ln 2 divided by t is equals to your ln 2 divided by t1 plus ln 2 divided by your t2, so everywhere ln gets cancelled, so 1 by t will be equal to your 1 by t1 plus 1 by t2, ये हो गया हाफ लाइफ इसके, isn't it? So the mean life period for the first process is given as of here, so t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा, t is equals to t1 t2 divided by t1 plus of your t2। चलो, which of the following gases possess the large internal energy, ये क्वेश्चन आप लोग को करना है बेटा, which of the following gases possess the large internal energy, पहले कोई इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बताएगा बेटा, can anyone tell me what is an internal energy formula? du is equals to n into cv into delta tr dt, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, so u is equals to n into cv into dt। फर्स्ट वन इज फॉर हीलियम, अगर मैं हीलियम की बात करूं तो cv मतलब मोनोएटॉमिक गैस, so cv will be equal to 3 by 2 times of r, so number of moles कितने हैं 2, that is 2 into 3 by 2 into r into temperature is given as 300 Kelvin, तो कितना आ रहा है देखिए 2 2 चले जाएगा, this will be 900 times of r आ गया। The next one is 56 grams of nitrogen, for nitrogen अगर मैं बात कर रहा हूँ, for the nitrogen cv is equals to 5 by 2 into r because diatomic gas है, तो internal energy will be equal to number of moles कितने बेटा 56 grams है, यानी n is equals to mass by molecular weight, mass will be equal to 56 divided by molecular weight of nitrogen is 82, यानी n की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर 56 divided by 28 into 5r divided by 2 into 300, देखो कितना आ रहा है, I'm leaving the calculation for you, आप लोग चेक कर लो, लेकिन मेथड इतना ही करने के लिए, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला du is equal to n into cv into d2, यहाँ पर मास दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका m divided by your कैपिटल, नाइट्रोजन हो गया, उसके बाद 8 grams of your ऑक्सीजन हो गया मेरे पास, ऑक्सीजन is also diatomic gas, for diatomic gas cv will be equal to 5r divided by your 2, so internal energy will be equal to कितना ग्राम दे रखा है 8 grams दे रखा है, तो number of moles will be equal to 8 divided by molecular weight of the oxygen will be equal to 32, यानी 8 by 32 into this is 5r divided by 2 into 300, ये देख लो कितना आ रहा, ठीक है ना। The last one is 16 to 10 to the power of 26 molecules of the argon occupying 40 meter cube at 900 Kelvin per revolution, यानी एलिमेंट कौन सा दे रखा है मेरे पास, argon। Next one is given for me as of your argon, argon is a monatomic, यानी cv is equals to 3r divided by 2, so u will be equal to number of moles will be equal to कितने ग्राम दे रखा है 6 into 10 to the power of 26
molecules में दे रखा है, तो I can write here molecules divided by your Avogadro number, that is 6 into 10 to the power of 23 ले लीजिए approximately. That is your 3/2 into R into your, this will be equal to what temperature it is right now? 900 Kelvin. So this one is 900. इसको simplify कर लीजिए. So which one of the following gases possess the large internal energy? So I hope इसमें से अगर देखा जा रहा है तो into 900 है, बाकी पूरे 300 है, तो just check with the options whatever you may be getting there. कर लोगे ना? एक तो मैंने पहले वाला कर दिया 900 आया, उसके बाद का कितना आ रहा है? 56 divided by 28 into 5R divided into your 300. ये some around 1500 into R आ रहा, and this one is some around 187.5 R आ रहा. And this one is very big number R, that is 896712 into R. Obviously, fourth option will be the answer. Just take care of calculation. Question number 5. Cp, Cv are the specific heat at a constant pressure and constant volume. It is observed that Cp minus Cv is equal to A for hydrogen and Cp minus Cv is equal to B for nitrogen. The correct relation between A and B will be equal to how much? A भी कितने की बार आप लोग कर चुके हो basically. Cp and Cv are the specific heat at the constant pressure and constant volume. The correct relation between A and B will be equal to how much? C is your molar specific heat beta, and we know the formula Cp minus Cv is equals to your R. So C will be equal to, first one कौन सा दे रखा है बेटा? Constant volume. It is observed for hydrogen, another one is for the nitrogen. Okay. C कैसे लिखोगे बेटा? In terms of molecular weights लिख सकते हो आप? Cp minus Cv is equals to how much? आया किसी को? Cp minus Cv is equals to A for hydrogen, Cp minus Cv is equals to B for nitrogen. The correct relation between A and B will be equal to how much? नहीं हुआ? देखो, C is your molar specific heat, na? So can I write in terms of specific heat for this one? This one is nothing but of your M into your specific heat. I can write in terms of your S for the P minus M into your SV is equals to R. If I'm writing for hydrogen, so I can write Sp minus Sv is equals to your R divided by molecular weight of hydrogen is 2. And this value is given as of your A in the problem. उसी तरह से next one के लिए लिख सकता हूँ मैं, isn't it? Specific heat. Small c से लिखो या s से लिखो संबंध से. Sp minus Sv is equals to R by molecular weight. Molecular weight of next one is how much for me? Hydrogen है nitrogen है. Nitrogen के लिए मतलब 28. That is given as of your P. This is equation number 2. This is equation number 1. दोनों को divide कर लीजिए. A by B will be equal to your. This is your R by 2 divided by this is R by 28. This one will get cancelled. So it is 28 divided by 2. 2 1s are 2 4s are यानी 14 आ गया. And A value will be equal to 14 times of your B. बस समझ में आए?
C is equals to molar specific heat, isn't it? Molar specific heat can be written as what, beta? C is equals to your molar specific heat value is also equal to mass into your specific heat. Done? तो C को मैंने क्या लिखा है यहाँ पर M into S लिखा है. M is the molecular weight. तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा. तो हाइड्रोजन के लिए molecular weight is 2 and for nitrogen the molecular weight is 28. दोनों का रेशियो ले लो, आराम से निकल जाएगा. Yes, yes. Question number 16. आप लोग करना. Two heat engines A and B have their sources at 100 Kelvin and 1100 Kelvin, and their sinks are at 500 Kelvin and 400 Kelvin respectively. What is true about their efficiencies? So neta A is equal to neta B, neta A is greater than neta B, neta A is lesser than neta B, and cannot be predicted. बताइए. हीट इंजन का फॉर्मूला याद है एफिशिएंसी का? Efficiency का फॉर्मूला neta is equals to 1 minus of T2 divided by T1, lower temperature divided by higher temperature. अब दोनों के लिए लिख लो ना बेसिकली, Na और Nb लिख लीजिए. Efficiency neta of your A will be equal to 1 minus T2 divided by T1. देखिए वैल्यू कितना आ रहा है, देखो 1 minus T2 की वैल्यू कितनी है बेटा? A and B are having their sources at 1000 Kelvin and 110, यानी T1 की वैल्यू इसकी 110 है, and their sinks are at a temperature 500 and 400, यानी this will be equal to 500 divided by 1. ये कितना हो जाएगा बेटा? The sources A के लिए source is a temperature of 1000. इसमें से 2 0 चले गए, इसमें से 2 0 चले गए, बेसिकली नीचे 5 1s 5 2s 1 minus 1 by 2, 1 minus 1 by 2 कितना हो जाएगा? 1 by 2. Efficiency of beta will be equal to 1 minus T2. T2 की वैल्यू कितनी है बेटा? T2 is nothing but sink. Sink का टेम्परेचर है मेरे पास 400 divided by temperature is 1100. ये वाला चले गया. So it is 1 minus 4 by 11. ठीक है ना? So this will be equal to 7 by 11. तो obviously कौन बड़ा दिख रहा है आपको? 7 by 11 बड़ा है कि 1 by 2 बड़ा है? 1 by 2. 1 by 2 इस बड़ा है. 7 by 11. 7 by 11 होगा ना बेटा. 1 by 2 मतलब 0.5. 7 by 11 मतलब कितना हो जाएगा? 7 by 10 भी लोगे तो 0.7 आएगा. नियर बाई कर लोगे तो लॉजिक लगा रहे वो भी तो. हाँ, yes sir, yes. नहीं, neta of your B is greater than neta of your. तो कौन सा ऑप्शन लिखोगे? Third option. Neta A is lesser than neta B. Third option. चलो. जस्ट ऐसे ही फॉर्मलेस डिवीजन होते बोल के हो रहा देखो. क्वेश्चन नंबर 18 देख लो बेटा, एक बार ट्राई करो आप लोग. क्वेश्चन नंबर 18. If 1 gram of substance of relative density 2 and to 4 gram of another substance of relative density 3 are mixed together, the relative density of the mixture. खाली डेंसिटी का फॉर्मूला बेटा, मिक्सचर ऑफ डेंसिटीज आप लोग ने पढ़े हो गए. When 2 of the liquids are being added, what will be the answer for that one? 18th one. Density is equals to mass by volume ना बेटा. फर्स्ट वन का कितना दे रखा है? मास इज m1 is equals to 1 gram of relative density 2. Relative density is कहते हैं 2 and m2 is equals to 4 gram. Another substance having their relative density of 3 are mixed together. Then the relative density of the mixture will be equal to how much? Density का फॉर्मूला क्या है बताओ जल्दी से. Density is equals to mass by volume, isn't it? Mass by your volume. और volume is equals to your mass by density. Now tell me volume of the first substance कितना बन जाएगा बेटा? Volume of the first substance will be equal to relative density का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Inversely proportional to volume है ना बेटा. Density और mass के बीच में जो relation है, that is right now for me. Volume is equals to mass by your density, isn't it? So volume of the first substance will be equal to how much beta? V1 will become how much for me? 1 by 2. Volume of the second substance will become how much for me beta? 4 by 3, isn't it? तो relative density कितना हो गया? Relative density is equal to total mass m1 plus m2 यानी 1 plus 4 divided by ये कितना बन जाएगा? 1 by 2 plus of your 4 by 3. Simplify कर लो, that will give me the answer. चलिए next one. A material has a Poisson's ratio of 0.25. If a uniform rod suffers a longitudinal strain of 2 into 10 power minus 3, the percentage increase in its volume will be equal to how much? Direct formula based question है, याद है किसी को?
पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर lateral strain by longitudinal strain डेल्टा एल बाय योर यल. In the problem he has given for me delta r by r value is equals to minus of 1 into 10 to the power of minus 3. और volume पूछ रहा है right now. The problem is telling the percentage increase in its volume. Volume of your rod or cylinder will be equal to area into length, that is pi r square into L. इसका एरर लिख लो, डेल्टा v by v is equals to 2 into delta r by r plus of your delta L by your L, isn't it? The problem क्या बोल रहा है? Material has a Poisson's ratio of 0.5 if the uniform rod suffers a longitudinal strain of your 2 into 10 power of your minus 3. सिग्मा भी दे रखा है ना बेटा, इसमें से डेल्टा आर की वैल्यू आ गई मेरे पास. तो the percentage error in its volume will be equal to how much? कितना आ गया बताइए? Delta v by v is equals to 2 into delta r by r plus of your delta L by your L. Into 100 कर लीजिए on both the side, percentage में पूछा है ना, into 100 कर लीजिए. So this will be equal to how much? रॉड यूनिफॉर्म है बेटा, ने डेल्टा एल डेल्टा आर बाय आर की वैल्यू हो गई मेरे पास -1 into 10 to the power of -3. यानी चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है? आ गया? Material has a Poisson's ratio of 0.5 if the uniform rod of it suffers a longitudinal strain of 2 into 10 power -3. The percentage in its volume will be equal to how much? Calculation का ही पार्ट है बेटा बस. किसी को भी नहीं आ रहा? फॉर्मूला इतना क्लियरली बता दिया बेटा मैंने. और थोड़ा कैलकुलेट कर लेता हूँ, नहीं हो रहा. डेल्टा v डिवाइडेड बाय v इज इक्वल्स टू, अगर पॉइजन रेशियो में लिखो तो कितना हो जाएगा? 1 minus 2 times of your sigma into this one is delta L divided by your L. ठीक है ना? So this is your 1 minus 2 into पॉइजन रेशियो कितना दे रखा है बेटा? 0.5, यानी ये 1/2. ये वाला चले गया into your delta L by your L. तो कितना बन गया बेटा? 1 minus 1 into your delta L by your L. ये पूरा कितना हो गया? 0 into delta L by L. So anything multiplied with a 0 will always be 0. So it should be your 0%. Done. Sure. Question number 20. Two Carnot engines are operated in successive, यानी एक के बाद एक, successive simultaneously. The first one receives the heat from the source at T1 is equals to 400 Kelvin and rejects the sink at T2. The second engine receives the heat rejected by the first engine and rejects the another sink at your T3. If the efficiency of both the engines are equal, then what will be the relation of T2? It is a direct question है. दोनों का efficiency same है ना बेटा? N1 is equals to into series combination में जब लगा रहे हो, so this will be equal to 1 minus T2 divided by T1 will be equal to 1 minus इसका output हो गया T3 और इसका input will be equal to your T2. ठीक है ना?
तो अभी कितना बन जाएगा बेटा? दिस विल बिकम फॉर मी T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू T1 इंटू T3। तो T2 की वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट ऑफ योर T1 इंटू योर T3। दैट इज अंडर रूट ऑफ योर T1 की वैल्यू कितना दे रखा है 400 इंटू दिस वन इज योर 100। So this value will become how much for me beta? 400 into your 100 into 100 I beta. And it for 200. So this will be your 200. Done. Sure. Question number 21, 22 वो लोग बाद में आइए आप. Then question number 24 is circular motion. 25 is also here. Vector conditions 25 declare. 25 पर बताओ बेटा. If F is the force acting on a particle having the position vector r, let r tau be the torque on this force about the origin. Then torque कैसे लिखोगे अभी बताओ? Torque tau is equals to your r bar cross p bar. ये dot product में है, isn't it? So if I'm writing in terms of a dot product, so cross product में क्या हो जाएगा? Dot product क्या हो जाएगा बताइए? Dot product cos theta sir. This will be sin theta or dot product cos theta. If F is the force acting on a particle having the position vector r, tau be the torque on this force about the origin. Then what will be the relation for this one? So tau cross r. क्योंकि torque always acts perpendicular ना बेटा. Perpendicular मतलब cos theta की वैल्यू 0 हो जाएगी. यानी dot product will become for me 0. Isn't it? Yes sir. और डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया राइट नाउ फॉर मी. तो इसके अंदर दो ऑप्शन ही दिख रहे हैं. फर्स्ट ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा. क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो cos 90 में सिर्फ सेकंड और फोर्थ ऑप्शन के बीच में आंसर होना चाहिए. और डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू सिमिलर विल बी इक्वल टू और 0 होगा क्या? डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू सिमिलर यानी टाउ बार डॉट ऑफ योर आर बार, दोनों के बीच में एंगल कितनी है? 90. तो डॉट प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा? ए वैल्यू भी 0 हो जाएगी. फोर्स आल्सो विल बिकम फॉर मी 0. तो सेकंड ऑप्शन विल बी द बेस्ट ऑप्शन. क्योंकि ऑल द थ्री विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर ना बेटा. टार्क इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो कोई भी दो चीज से आप मल्टीप्लाई करो तो कभी भी 0 आ जाएगा. टाउ इज इक्वल्स टू आर बार क्रॉस पी बार एफ बार. यानी ये अगर आर है और ये मेरे पास एफ है तो इसका टार्क जो है ना परपेंडिकुलर होता है. तो हर चीज से ये एंगल कितनी बना रहा है? 90 डिग्री से बना रहा है. तो कोई दो चीज को भी अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे ना इसका वैल्यू 0 ही आएगा. सर cos 90 1 होता ना सर? अगर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे दे रहा ना सर? क्रॉस प्रोडक्ट sin 90 है. क्रॉस प्रोडक्ट नहीं दिया ना कहीं पर भी ऑप्शन में आप. हाँ डॉट प्रोडक्ट दिया ना सर? हाँ डॉट प्रोडक्ट दिया तो क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या? ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी इनटू cos 90. cos 90 कितना होता है? 0. sin 90 is 1. यस सर टोटल 0 हो जाएगा सब भी. ओके सर. डन. यस सर. देन 27 28 देखो 28 ट्राई करो सभी लोग. ग्रेविटेशन का है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. The body of mass m is being placed on the earth's surface. When it is taken from the earth to the surface of your height h is equals to 3r. Change in potential energy. Formula याद है directly? du is equals to your mg into your r divided by 1 plus of r by h. Direct shortcut formula. Change in potential energy when it is being taken to a certain height. This will be mg into r divided by 1 plus r. h की वैल्यू कितना दे रखा है प्रॉब्लम में? 3r. So this is your 3r. तो यार चले गया. दिस इज योर mg into your r divided by 1 plus 1 by 3. 1 plus 1 by 3 मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 4 by 3. तो 3 ऊपर चले जाएगा. 3 mg into r divided by 4. अब ये फॉर्मूला कैसा है मत पूछो. देयर इज डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला. रेगुलर क्लासेस में आप लोग ने पढ़े ही होंगे. So when it is being taken to a certain height, the change in potential energy formula in terms of small g is mg into r divided by 1 plus r by h. Done? Yes, question number 29. The largest and the shortest distance of the earth from the sun are r1 and r2, apogee and perigee. The distance from the sun when it is at a perpendicular to the major axis of the orbit drawn from the axis will be equal to how much? ये तो मीन हो जाएगा कभी भी. That is nothing but 2 times of your r1 into your r2. Directly आंसर याद रख लीजिए. In the elliptical path, if I am taking right now,
This one is right now for me or R2, and from this one foci for this given condition. यहाँ पर मान के चलो सन है, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया R2, and from this one it is your R1. R1 और R2 का जो relation हो जाएगा, that will be 2 times of R1 R2 divided by R1 plus R2. Yes sir. Derivation याद मत रखो, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अगर आ गया तो ये टिक करके आ सकते हो. क्वेश्चन नंबर 31 ट्राई करिए, बताइए जल्दी सब जरा. Consider expression P is equals to A minus x square divided by Pt, where P is the power, x is the position coordinate, and T is the time. What is the dimension formula for the constant P? बोलना. Consider the expression P is equals to A minus x square divided by Bt, where P is the power, x is the position coordinate, T is the time. What is the dimension formula for the constant P? You can add or subtract the same equations. बोला था मैंने. Dimension of A will be equal to x square, isn't it? X is nothing but position है, तो ये हो गया L square. T is nothing but time, that is nothing but capital T. P is power, power का dimension कितना होता है बेटा? ml square T power कितना हो जाएगा बताइए? -3, because power is equals to energy divided by time. It is ml square T power -2 divided by T. So it is your m into L square T power -3 हो जाएगा. That is the power का dimension. ठीक है ना? अब B का dimension निकाल लीजिए. सब कुछ मालूम है अपने पास. P is equals to A minus x square divided by B into T. यानी B value will be equal to A minus x square divided by P into T. A minus x square का मतलब dimension, this will be equal to how much for me? L square divided by power is m L square T power -3 into time is nothing but T. तो सिंप्लीफाई कर लो, m तो ऊपर चलेगा, m पावर -1, तो m पावर -1 सभी ऑप्शन में दिख रहा है, तो वी कांट एलिमिनेट इट. al स्क्वायर चले गया, तो l पावर 0 कहीं दिख रहा है कि l पावर 0 दो ऑप्शंस में दिख रहा है, यानी 4 और 3 तो एलिमिनेट हो गया, और t ऊपर चले गया, दैट इज नथिंग बट t पावर ऑफ योर, ऑलरेडी t है ना बेटा, यहाँ पर t पावर -3 है और यहाँ पर t+1 है, तो ये ऊपर चलेगा तो t पावर -2 हो जाएगा. t पावर -2 मतलब कौन सा दिख रहा है बेटा? t पावर, यहाँ पर तो नीचे -2 था, ऊपर चलेगा तो +2 बन जाएगा. ठीक है ना? सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी बेटा? विच ऑप्शन दिख रहा है? देखो सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा मेरे को. डन. चल, क्वेश्चन नंबर 32. Consider the following statements. Statement 1. The binding energy per nucleon is practically independent of mass number for nuclei of the middle mass of 30 lesser than or A lesser than 170 part of relation. क्या ट्रू है बेटा? Binding energy per nucleon is practically independent of mass number for nuclei of the middle mass is number 30. Let's say A is lesser than 30 and A is 170. Statement 2. Binding energy per nucleon is lower for both light nuclei and heavy for your A greater than 170. Obviously, both of them are correct. Done. So both the statements are correct for me. Yes sir. Sure. Question number 33. Gravitational potential difference between a point on the surface of a planet and another point 10 meters above is 4 joule per kg. Considering the gravitational field to be uniform, how much work is done in moving a mass of 2 kg from the surface to a point of 5 meter above the surface of the earth? Gravitational field का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Gravitational field is equals to change in potential divided by your r, isn't it? So change in potential कितना दे रखा है प्रॉब्लम में? देखो आप, gravitational potential difference between a point on the surface of the planet and another point of 10 meters is given as 4. यानी ये हो जाएगा minus of 4. Distance is right now for me 10, isn't it? So minus of minus ये हो जाएगा plus. This will be equal to 4 by 10. This unit is right now joule kg meter. अब उसने क्या बोला? Considering a gravitational field to be uniform, how much work is being done in moving a mass of 2 kg? तो work done will be equal to mg into h. मास कितना मूव कर रहे हैं? 2. g की वैल्यू अपन ले रहे हैं कितना? बेसिकली g इज नथिंग बट यहाँ पर फील्ड, यही फील्ड होगा ना, ग्रेविटेशनल फील्ड, because it is moving in the gravitational field, so that value will be equal to 4 by 10. It is not acceleration due to gravity, this is a gravitational field. ये जो से लिखता है ना, ये gravitational field into height. height की वैल्यू कितनी है? 5 meters. It is 5 1s 5 2s, ये वाला चले गया, so this will be equal to your 4 joules. Good question.
Then 34 is electrostatics, 35 is also electrostatics, 36 is also electrostatics, 37 is also electrostatics, 38 is electrostatics, 39 is electrical dipole, disk, proton, particle describing the circular same field. क्वेश्चन नंबर 44 शायद अपन कर सकते हैं, इलास्टिसिटी का दिख रहा है मुझे। 44 कर सकते हैं, कांस्टेंट फोर्स से भी कर सकते हैं, फ्यूज वायर 48 का क्वेश्चन करना है अपने, देन 44 का क्वेश्चन भी करना है। चलो 44 का देखो बेटा, the length of the metal wire is L1 when the same tension in it is T1, T1 and T2 when the tension in it is T2. The unstretched length of the wire will be equal to how much? Standard question है basically. Standard length when the two of them are given, आप directly याद रख सकते हो कभी भी, L is equals to two tensions में दे रखा है तो पहले second tension multiplied with your first tension minus उसके बाद first tension multiplied with your second length divided by दोनों का difference T2 minus of T1. करते बैठे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बट ऐसे कभी एक जनरल डायरेक्ट फॉर्मूला है, द लेंथ ऑफ द मेटल वायर जो है ना, इट इज गिवन एज L1 व्हेन द टेंशन इट इज T1, L2 व्हेन इट इज इन T2. द अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ द वायर विल बी इक्वल टू हाउ मच? फाइनल टेंशन इनटू इनिशियल लेंथ माइनस इनिशियल टेंशन इनटू फाइनल लेंथ डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ द टेंशंस. क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए. Fuse wire must have high resistance per unit length and low melting point. Fuse is used for small current flow only. क्या होगा बताइए? नहीं सर, रॉन्ग है सर. Fuse wire must have high resistance per unit length and low melting point. रॉन्ग है ना सर? हाँ रॉन्ग है. हाँ सर. Fuse wire must have high resistance per unit length and low melting point. फ्यूज वायर घर में हम लोग जब यूज करते हैं ना बेटा, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए. अगर जला भी तो वायर जो है ना जलना नहीं जल्दी, उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए. इट शुड हैव एन हाई रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यानी अगर वायर ज्यादा जल गया तो इसमें ज्यादा रेसिस्टेंस है तो ज्यादा करंट नहीं जाएगा. फ्यूज इज यूज्ड फॉर द स्मॉल करंट फ्लो ओनली. फ्यूज इज यूज्ड फॉर द स्मॉल करंट फ्लो ओनली. हाँ, फ्यूज वायर कैसे यूज करते हैं बेटा? आपने कभी देखा होगा, दो वायर्स के बीच में एक डायरेक्टलेस वायर लगा देते हैं बेसिकली, isn't it? तो दोनों भी सही है सर. रीजन इज आल्सो करेक्ट. नहीं, assertion is correct right now for that one. For this one क्या बोल रहा है right now? The fuse wire must have a high resistance. ये तो correct है. Fuse is used for small current flow बोल रहा है. Resistance wire छोटा होगा लेकिन current flow नहीं होगा. पूरा घर के लिए fuse wire यूज करते हैं ना अपन. Fuse is used for the small current flow बोल रहा है. Fuse wire is used between any two points, तो उसका resistance कम होगा, लेकिन for that one the flow of the current पूरे घर के लिए यूज कर रहे हैं ना बेटा. यस सर. फ्यूज वायर कहाँ यूज करते हैं? पूरा करंट घर के लिए यूज करते हैं या आप सिर्फ एक टीवी के लिए यूज कर रहे हैं या किसी और के लिए यूज कर रहे हैं? पूरे घर के लिए यूज करेंगे ना. तो फ्यूज इज यूज्ड फॉर स्मॉल करंट, नो इट इज यूज्ड फॉर द टोटल करंट फ्लोइंग इन द गिवन सर्किट. सो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. सर लेकिन हाई रेसिस्टेंस बोले तो फिर घर पे नहीं यूज कर देना सर, रेसिस्टेंस लो यूज कर दे अपन. नहीं, वो घर में यूज करने के बाद फ्यूज वायर जब यूज करते हैं ना बेटा, फ्यूज वायर में अगर सडनली बहुत हाई करंट आ गया तो ही ये फ्यूज वायर वर्क करेगा, वरना वर्क नहीं करता है. ओके. करंट के अंदर अगर अपने को जो लिमिट से करंट अगर ज्यादा गया तो ही फ्यूज वायर उड़ जाता. हाँ यस सर. यस यस. ठीक है. तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. यस सर. क्वेश्चन नंबर 50 देखिए एक बार. In meter bridge experiment, point for the unknown resistance is measured. Now the unknown resistance is put inside an enclosure maintained at higher temperature. The null point can be obtained at the same point as before by decreasing the value of the standard resistance. The resistance of the metal wire remains constant with increase in your temperature. In meter bridge ऐसा होता है, याद है आप लोग? ऐसा तो होता है बेसिकली ऐसा L शेप, इन दोनों के बीच में वायर, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर होता है, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगा हुआ रहता है और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगा हुआ रहता है. This is connected to the jockey and this is the current. तो अब इसने क्या बोला? इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज बीन मेजर्ड. नाउ द अननोन रेजिस्टेंस इज बीन पुट इन एनक्लोजर मेंटेनिंग एट हायर टेंपरेचर.
the null point can be obtained at the same point as before, decreasing the value of the standard resistance. ना अगर बढ़ गया तो उसकी conductivity भी बढ़ जाएगी, तो ये resistance point ये जो null point है ना ये change हो जाएगा. तो assertion is wrong. Reason of the metal, resistance of the metal remains constant with increase in temperature. नहीं, जैसे जैसे temperature बढ़ेगा उसका resistance भी change होते जाएगा, isn't it? Resistance के directly proportional to temperature है ना बेटा. RT is equals to R naught into 1 plus alpha into delta theta. जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा. बोथ assertion reasons are false for that one. Fourth option, sir. Yeah. आप लोग थोड़ा आज वेव ऑप्टिक्स के फॉर्मुलेस रिवीजन कर लीजिए बेटा अच्छी तरह से. बार वेव ऑप्टिक्स रिवीजन कर लीजिए, मॉडर्न फिजिक्स का रिवीजन कर लीजिए, यूनिट्स एंड डायमेंशंस रिवीजन कर लीजिए. Isn't it? Errors, significant figures, vernier calipers, isn't it? Sound waves, open organ pipe, closed organ pipe, Doppler effect के वगैरह क्वेश्चंस वगैरह. और एक पेज पर देख लेते हैं जल्दी. First one is differentiation, next one is kinematics, third one is particle. This is also kinematics, momentum, Newton's laws of motion. Sixth one, seventh one, eighth one, ninth one, position of center of mass for the steel breaking stress. 10th one try कर सकते हैं. Non viscous liquid, question number 11 भी try कर सकते हैं. Question number 12, 10 gram of ice at 0 degree Celsius is mixed with 10 grams of water at 20 degree. The final temperature they भी check कर सकते हैं. Question number 30 also we can check it out once. Matter. Then question number identical, question number 18, question number 19 electrostatics, thermal speed of the free electrons. 21 try कर सकते हैं, 22 try कर सकते हैं, 23 भी कर सकते हैं आप लोग, 24, 25, 26, 27, 28, 29 average force 29 करना है अपने को. And then question number 32 electrostatic photoelectric effect का है. Question number 33, question number 34, question number 35. Then question number the increase in the pressure 20 liters, ये भी करना है आपको. 38. Then right now heat has been added. Question number 40, question number 41. Then question number 45. Then question number electric bulb का problem भी कर लेना है. The electron both the fields of field है uniform. And question number 50. चलो जल्दी जल्दी देखो. Question number 10. For a steel, the breaking stress is 16 to 10 to the power of 6 Newton per meter square, and the density is 18 to 10 to the power of 3 kg per meter cube. The maximum length of the steel wire, which can be suspended without breaking under its own weight, will be equal to how much? Okay. सर जरा स्क्रीन शेयर करिए. आप स्क्रीन शेयर नहीं. Screen share नहीं हुआ, sorry. Question number 10, 11 try करिए बेटा. Direct question. For a steel, the breaking stress is given for me 6 into 10 to the power of 6. Stress का फॉर्मूला याद है आप लोग? Stress is equals to force divided by area, isn't it? Density दे रखा है प्रॉब्लम में. The maximum length भी दे रखा है, which can sustain the without breaking under its own weight. Which can G की वैल्यू दे रखा है 10. Stress density.
by area. Mass is equals to volume into density into G divided by area. Volume is equals to area into length into rho into G divided by A. A or A gets cancelled. So stress will be equal to L rho into G. पूछा क्या प्रॉब्लम है? The maximum length यानी L is equals to stress divided by rho into G. तो breaking stress कितना है बेटा? 6 into 10 to the power of 6 divided by density is 8 into 10 to the power of 3. G की वैल्यू हो गई 10. चलिए बताइए कितना? 75 सर. आ गया सभी को? Yes sir, 75. $75 meters. Very good. Question number 11. Question number 11. A non-viscous fluid of a constant density constant 1000 kg per meter cube flows in a streamlined motion along a tube of variable cross section. The area of cross section of the point P and Q, यानी जहाँ पर enter और बाहर निकल रहा है, तो at a point P and as well as of your Q. The areas are given as per me 5 and meters are 40 meter per second square and 20 meter per second square. If the liquid fluid P is 3 meter per second, then final velocity will be equal to how much? Is the equation of continuity A1 V1 will be equal to your A2 into V2. यहाँ पर का एरिया A1, यहाँ पर का एरिया V2, यहाँ पर की वेलोसिटी V1 और यहाँ पर की वेलोसिटी V2. इनकी डेंसिटी तो सेम है बेसिकली. तो A1 कितना दे रखा है बेटा? 40 into velocity is given as 3, A2 is given as 20 into V2 निकालना है आपने, isn't it? So V2 value will be equal to 40 into 3 divided by 20. कितना आ रहा? 6. आ गया? वेरी गुड. चलो क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करिए बेटा. If 10 gram of ice at 0 degrees Celsius is mixed with the 10 gram of water at 20 degrees Celsius, the final temperature will be equal to your how much? $10 gram of ice at 0 degrees Celsius. देखो heat required to melt 10 gram of ice will be equal to how much beta? Q is equals to mass is 10 into 80. That will be equal to your 800 calories. Then heat released by the water when it is 10 degrees Celsius, when it is cooled from 10 to your 0. So that will be equal to your Q is equals to ms into delta theta. ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया. So इसका मास कितना दे रखा है बेटा? 10. Specific heat of water is 1. Temperature difference is nothing but for me 10. 10 minus 0. Final temperature minus lower temperature. That will be equal to 100 calories. समझ में आया? Heat required to melt 10 gram of ice is 800 and heat required by the water to come from 10 degrees Celsius to some 0 degrees Celsius is how much for me? 100. The required heat must be more than the released, so final temperature will be equal to how much? 0 degrees Celsius. Is it? Because your answer will be always between 0 and 100. अगर 100 से ऊपर आया मतलब certain amount of steam is present. Less आया मतलब certain amount of steam is ice is been present. So it can't be more than 100 or not lesser than this one. यानी the best option right, what I can check it right now here is 0 degrees Celsius. सर कैसा सर? Q is equals to
ये आइस है मेरे पास at 0 degree Celsius is been mixed with your water at your 10 grams. 10 grams at 20 degrees Celsius. Ice at 0 degrees Celsius will convert into water at 0 degrees Celsius. Yes, sir. Isn't it? So this will convert into water at 0 degrees Celsius. तो यहाँ पर हो गया m into L and water at 20 degrees Celsius. कितना temperature? Sorry, this one is at your 10 grams, 20 degrees Celsius. Isn't it? So now this value will be equal to Q is equals to ms into your delta theta. Isn't it? Mass is 1, specific heat is 1, into temperature difference is right now. Higher temperature is 20. And it is coming to common temperature मान के चलो T दोनों mix करने के बाद. And water is coming to right now from 0 degrees Celsius to water at your T degrees Celsius. And this will be equal to m into S into your delta T. And this will be equal to your m into your L of your ice will be equal to your m into your specific heat of water into temperature difference, that is T. This will be equal to your ms into your temperature difference, 20 minus T. So common temperature निकालो इसमें. जर्नी ऑफ आइस बताया था मैंने आप लोगों को, नहीं समझ में आया? नहीं आया सर. जर्नी तो समझ में आ गया सर. जीरो से जीरो मेल्टिंग हो रहा, फिर उसके बाद हाँ, फिर अब इक्वेशन आपको सिंप्लीफाई करना चाहिए ना बेटा. आंसर देखो, कभी भी आपका कॉमन टेम्परेचर 0 से 100 के अंदर ही आना चाहिए. अगर आपका टेम्परेचर उसके ऊपर आ रहा है मतलब दैट फिनोमिनन में थोड़ा आइस रहेगा या थोड़ा अमाउंट ऑफ स्टीम रह जाएगा. अगर आपका आंसर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस आ रहा है मतलब स्टीम रहेगा. अगर आपका आंसर 0 से कम आ रहा मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ आइस इज बीन प्रेजेंट. तो वैसे वाले कंडीशन में आपको बेस्ट ऑप्शन 0 डिग्री सेल्सियस ही लगा के आना, बिकॉज इज नॉट आस्किंग द फाइनल टेम्परेचर्स आर मिक्सचर्स. यहाँ पर देखो 10 ग्राम ऑफ योर आइस will convert into 10 grams of water at 0 degrees Celsius. This is also at 0 degrees Celsius. This 10 grams of water will convert into grams of water at T degrees Celsius. Isn't it? उसी तरह से यहाँ पर 10 grams of water at 20 degrees Celsius will convert into 10 grams of water at T degrees Celsius. Who is losing in organically? Heat 20 degree. Heat gained by ice must be equal to heat lost by water. मतलब यहाँ से यहाँ तक this one is m into L of ice. So mass कितना है 10 into your 80 plus. The next one is यहाँ से यहाँ तक mass is 10 into specific heat of water is 1 into temperature difference T minus 0. That must be equal to यहाँ से यहाँ तक this is right now mass 10, specific heat is 1. This is 20 minus T. 10 into 80 is how much per minute? 800 plus 10T. 10T is equals to 10 into 20 minus T. 10 into 20 कितना होता? 200 minus 10T. 10T. तो अब देखो कितना, this one is your 800. Isn't it? 200 को किधर ला लो? कितना होगा? पूरे टी टर्म्स एक जगह ला लो बेटा. 800 this is minus 200 is equals to ये कितना बन जाएगा? आया? All the t terms on one side. A minus t है, so this will be equal to 20t. That will be equal to 200. A plus चले जाएगा. This is minus 800. तो टेम्परेचर कितना आ रहा? सर minus 30. तो minus 30 टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है क्या अपने को? नहीं करता. अभी भी हीट लॉस रेट गेन में आपको आंसर 0 से लेके 100 तक ही जाना चाहिए बेटा. माइनस में आ रहा मतलब नियर बाय आंसर 0 डिग्री सेल्सियस है. अगर आपको टेम्परेचर मान के चलो 120 आ गया तो जब आपका आंसर आपका 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए. ओके सर, ओके. यस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करिए एक बार.
1 mole of an ideal monatomic gas is heated at a constant pressure of 1 atmosphere from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. The change in internal energy. ये तो दुनिया भर के टाइम पे आया फॉर्मूला तो रट्टा हो जाना चाहिए तब तक कि आप लोग. Number of moles is N is equals to 1. Gas is heated at a constant pressure of 1 atmospheric pressure from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. The change in internal energy will be equal to how much? Internal energy को फॉर्मूला क्या है बताओ जल्दी से. Delta U is equals to your N to always CV into delta T. What is the value of CV beta? What type of a gas it is? Monatomic. Monatomic के लिए कौन सा गैस हो जाएगा? CV की value 3/2. Osmosis 1. This will be equal to 3R divided by 2 into temperature difference कितना है? 100 minus 0. This is equals to 100. आ गया? This will be equal to how much? 150 R. 150 into R. R नहीं दिया, R की वैल्यू भी डाल दो. 150 into R की वैल्यू कितनी होती है? 8.3. So डाल दो कितना आ रहा है देखो 150 into 8.3. नियर बाई में बोल दीजिए. Sir, second option. 1, 2, 4. Okay. Question number 21. The order of the thermal speed of the free electrons in the conductors at room temperature will be equal to how much? So these are in terms of your electrons which are in the form of a molecule. So velocity is given by the formula V is equals to under root of your 3 into kT divided by F. K is Boltzmann's constant, so it is under root of your 3. Boltzmann's constant की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1.3 into 10 to the power of your minus 23 into temperature. Temperature कितना है मेरे पास यहाँ पर? 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर मतलब into your 300. कुछ भी नहीं दिया तो रूम टेम्परेचर ले लेंगे बेटा. रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय मास. मास इज 9 into 10 to the power of minus 31 for the electrons. So simplify कर लो, see whatever you get the answer, that will be the condition. चलो सेकंड ऑप्शन आ रहा है 10 to the power of 5 meter per second. चलो 22. The potential difference between A and B in the given circuit is how much? Potential difference between A and as well as of B. Kirchhoff law apply करिए बेटा, isn't it? So you're going the current from here right now, same direction. So this will be equal to positive terminal. So this will be equal to your 18 into your current will be equal to how much? यहाँ पर resistance is 3 और इसमें current जा रहा है मान के चलो I ampere. So same direction में जा रहे हैं right now. So it is potential is right now for EMF. This is your resistance. Current will be equal to how much? This will be same direction. That will be equal to the same amount of current यहाँ पर, same amount of current यहाँ पर, same amount of current यहाँ पर, and same amount of current यहाँ पर. This one. So I'm going from your A to B. Okay. So this is the first positive terminal. So it is right now 80. Done. The same direction. Same direction मतलब right now for me positive or negative बेटा? Negative ना? Minus of 3I. Minus of your I into 1 is nothing but equal to your minus I. Then right now 6 into your I. Minus of next one is 2 into I. The next one is EMF. That is nothing but of your जहाँ पर end हो रहा वहाँ पर. That is nothing but minus 6. Minus 2 minus 6 must be equal to 0. तो करंट निकल जाएगा उसमें मुझे पर. Apply the Kirchhoff law and first calculate what is the current flowing through that one. कितना आ रहा करंट?
A to Q, Q to B. So this will be equal to सेम डायरेक्शन में जा रहा हूँ, जहाँ पर एंड होगा वहां पर टर्मिनल होगा, प्लस 18. इसमें करंट जा रहा है, मान के चलो I एम्पियर्स. सो इट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस ऑफ 3I, माइनस ऑफ 1 into your I, then minus of your 6 into your I, then minus of 6 volt, minus of your 2 into I is equals to 0. करंट कितना आ रहा है देखिए, 18 minus 6, that will be equal to 12. 3, this one is 336. तो कितना हो गया, minus of your 12I is equals to 0. So I value will be equal to how much beta, 1 ampere. अगर current 1 ampere है, तो I need to calculate the potential. So start from your VA, isn't it? So if I'm talking about your यहाँ से potential at your EA plus current will be equal to your 1 into your 1 plus this one is your 1 into your 3, that will be minus of your 18, must be equal to your VB. A to B are basically coming from your A to B lines. Done? तो कितना आ रहा है देखिए, VA minus of VB will be equal to 18 minus of 4. So that will be equal to 14 volts. So potential difference across your A and B will be equal to 14 volts. Question number 14 direct है देखो बेटा. The equation of motion of a particle executing the SHM is d square x by dt square plus k into x 0. The time period of the particle will be equal to how much? Standard equation of SHM क्या होता है बेटा, बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग. A is equals to minus of omega square into x. A को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, d square into x divided by your dt square plus omega square into your x must be equal to 0. मतलब the time period का फॉर्मूला मतलब क्या होता है, t is equals to 2 pi by your omega. Is it comparing with the standard equation, omega square is equals to k, यानी omega is equals to your how much will be, omega is equals to root into your k. So time period will be equal to 2 pi divided by root into your k. Okay. Question number 22 आया सभी को. चलो. Then question number 29. Question number 29. Light with energy flux of 25 into 10 power 4 watt per meter square falls on a reflecting, perfectly reflecting surface at normal incidence. If the surface area is 15 meter per square, the average force exerted of, अगर एक perfectly reflecting है तो force का फॉर्मूला याद रख लीजिए बेटा, in terms of intensity, F is equals to 2I into A divided by C. So energy flux मतलब intensity बेटा, energy flux मतलब ये वाला जो है ना, that is called as intensity. I की वैल्यू दे रखा है. In the problem he has given me the area and he also given me the speed of light, 3 into 10 to the power of 8. तो इसको simplify कर लो, that will give me the answer. I'm leaving the calculation for you. Question number 32 देख लो बेटा. Metallic surface is illuminated alternatingly with a light of wavelength 3000 angstroms and 6000 angstroms respectively. It is observed that the maximum speed of the photoelectrons under these illuminations are 3:1. Calculate the work function of this one. A direct question है. अगर हम kinetic energy में लिख रहे हैं right now, instance equation that will be equal to your HC divided by lambda minus work function. याद है, energy is equals to your work function plus of your kinetic energy. Kinetic energy बाहर निकाला, energy को HC by lambda भी लिख सकता हूँ, isn't it? So wavelength कितना दे रखा है बेटा, lambda की first one is given for me as 3000 angstroms per deflection and another one is given as lambda 1, lambda 2 is given as of your 6000 angstroms per deflection, isn't it? And this will be 2 times of lambda 1 बोल सकता हूँ मैं basically. ठीक है ना. So if I'm writing first one, HC divided by your lambda 1 minus of your work function will be equal to your V1 square, first one के लिए, divided by this one is HC divided by lambda 2. Lambda 2 is nothing but 2 times of lambda 1 minus of work function is equals to, this one is right now for me V2 square. So V1 by V2 is given in the problem. So this will become for me 9 by 1. Isn't it? HC by lambda divided by this one. So work function निकाल लीजिए, so that will give me the answer. Done? Sure. Question number 33. फॉर्मूला बताइए बेटा, कैलकुलेशन कैन टेक केयर ऑफ, कैलकुलेशन करते बेटा तो टाइम लग जाएगा. Question number 33.
In a star, all helium nuclei are being converted into oxygen. If atomic mass of helium is given for me, atomic mass of oxygen is also given. The reaction energy for the atom of the oxygen will be equal to how much? So you know that this will be equal to delta M into your 931 MeV. Delta M कैसे निकालते हैं बेटा? Mass defect, that will be equal to your Z into your Mp minus A minus Z into your mass of neutron minus mass of your nucleus, isn't it? So that will be equal to how much for me? क्या है star? In a star, the helium nucleus are been converted. This का equation निकालो पहले. 4 times of your 2He4 will give me right now oxygen 816. This is the reaction of your helium nucleus in the sun. इसके लिए 4, इसकी binding energy 1.0026 दे रखा है energy. That will be your how much? इसकी energy कितना दे रखा है? 15. It is a 15.994 U. U मतलब AMU में दे रखा है बेसिकली. अगर डेल्टा एम निकालना है मास डिफेक्ट इन दोनों की, दिस विल बी इक्वल टू 4 into this one is 16.0140 minus this is right now for me 15.994. इसकी वैल्यू कर लो अप्रोक्सीमेटली 0.011 AMU आ गया डेल्टा एम. So energy value will be equal to how much for me? Delta M into 931. That is 0.011 into 931. That gives me the answer. Question number 34. In an NPN transistor, collector current is 24 milliamperes. If 80% of the electrons reach the collector, then the base current will be equal to how much? We know our formula. Emitter current is always equals to your collector current plus of your base current. Isn't it? Given how much for me? 80% of your emitter. It is telling that 80% of electrons reaches the collector current. Isn't it? So 80% of your collector current means right now, what is the total amount of current right now for me? 24 milliamperes. 80% and 80 by 100 of your collector current will be equal to 24 milliamperes. So from this one, I'll be getting the emitter current. So it is 24 into 100 divided by 80. So emitter current which is coming out right now will be equal to 30 milliamperes. So base current will be equal to how much? So base current निकाल दीजिए. So this is your 30, that is equals to your collector current, plus this one is your base current, that is nothing but IB. So IB निकालना अपने को, collector current कितना है बेटा? 24. So 30 minus 24, that will be equal to 6. 35. The ionization potential energy of lithium plus ion will be equal to how much? ये तो आप लोग बोल सकते हो डायरेक्टली. Ionization energy का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E is equal to minus 13.6 into Z square divided by H square. So this value will be equal to minus 13.6 into ionization of energy lithium element for the Z value will be equal to 3 square divided by 1. So it is a 3 square मतलब कितना हो जाएगा? 9 into 13.6. There is minus 122.4 electrons. Question number 38. Bulk motors का फॉर्मूला एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए. I'm not doing it all. Question number 40. Question number 40 देख लीजिए बेटा. If heat of 110 joule is being added to a gaseous system and change internal energy is 40, then interaction work done is equal to how much? First of thermodynamics, dq is equals to your du plus of your dw. Isn't it? dq कितना दे रखा है? Heat supply. dq is equals to your 110 joules and internal energy is given as for me 40 joules. So obviously dw कितना बन जाएगा? dw is equals to your 110 minus 40, that will be equal to 70. Simple question. Next one, RMS speed beta. The RMS speed of the gas molecule is 300 meter per second. Calculate the RMS speed of the molecular weight is doubled while the temperature is half. RMS का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, बस आप कैलकुलेशन आप क्लियर कर लीजिए. RMS का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? VRMS is equals to under root of 3RT divided by capital M. इसके हिसाब से आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, आ जाएगा आराम से. Question number 45. 45 is also a direct question. I hope everyone can do that one. A proton, neutron, and alpha particle are accelerated through the potentials of 1 volt, 2 volt, and 4 volt respectively. Their velocities will be in the ratio of how much per meter. So if I'm writing the velocity of the charged particle in by the de Broglie's wavelength, so V value will be equal to how much better? Proton, neutron, and alpha particle are accelerated through the same potentials. The velocity will be in the ratio of how much? Half into m into v square. De Broglie's wavelength is equals to h by m into v. But it is to m into v is because right now for me momentum. Momentum is under root of 2m into your kinetic energy.
Kinetic energy can be written in terms of stopping potential, E into V. Isn't it? So velocity will be equal to how much? V is equal to under root of 2 cube into potential divided by mass. So velocity of proton will be equal to under root of 2 charge of electron into same potential divided by mass. Velocity of deuteron will be equal to under root of, right now I'm talking about an alpha particle, and first one deuteron is 2e, and velocity will be equal to 2b to potential divided by mass is 2m. Alpha particle, for alpha particle if I'm writing, that is under root of here, charge is 2 times the charge of proton into mass is right now for me 4 times, that is nothing but 4m. Potential दे रखा problem है 1 2b 4b, तुम लोगों का रेशियो निकालो, that give me the answer. Question number 47 beta. An electric bulb is rated as 100 watt and 220 volt. If the bulb is connected across 100 volt, then the current drawn from the bulb will be equal to how much? Resistance of the bulb will be equal to how much beta? V square divided by P. Applied potential is 200 whole square, and 200 into 200 divided by 100. P will be equal for me 100 ohms. So this will be 400 ohms will be the resistance of the bulb. So this will be 400. So current will be equal to how much? I is equals to V by R. So V कितना दे रखा है 100, resistance is given as 400. तो ये बन गया 1/4. 1/4 मतलब 0.25 amperes. Question number 50. The circuit given below is equivalent to what, right? So इसमें direct question. इसका बताइए ये कौन सा गेट होता है? 2 inputs same है. This one is 2 inputs. ये हो गया मेरे पास NAND gate. This one is your NAND gate, and this one is right now for me NOR gate. नीचे वाला जो हो जाएगा, this will be your NOR gate. इसका आउटपुट कितना हो जाएगा? डन कर लोगे? This will be your NOR gate. इनपुट x है तो ये हो जाएगा x बार, ये आउट है तो ये हो जाएगा y बार. तो z वैल्यू विल बी इक्वल टू इन दोनों का डॉट, यानी ये बन जाएगा फिर से NOR गेट, यानी इसका ऑपोजिट हो जाएगा NOR. तो कितना हो जाएगा? देखो ये कौन सा गेट है बेटा? NOR गेट है. तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Z is equals to your x bar plus y bar पूरा का बार. Now this will be equal to your x double bar, ये बन जाएगा dot, and this one is y double bar, यानी this will become for me x into y. x into y मतलब कौन सा गेट बेटा? AND गेट. डन. थोड़ा रिवीजन कर लो बेटा 3-4 घंटे देके आप लोग, ठीक है? ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम एंड बी कॉन्फिडेंट, एंड जितना हो सका उतना ही करके आओ. डोंट अननेसेसरली गो फॉर योर नेगेटिव मार्किंग. ओके, कल हम लोग 5:30 के बाद जब पेपर आएगा तो पेपर भी डिस्कशन कर लेंगे इमीडिएटली 5:30 या 5:35 को. अगर आप लोगों के पास पेपर मिल रहा है तो इमीडिएटली शेयर कर दीजिए. जैसे आप लोग सेंटर से बाहर आए तो विल ट्राई टू डिस्कस द पेपर आल्सो इमीडिएटली 5:30 और 5:35. आई विल बी अवेलेबल ऑनलाइन फॉर एवरीवन फॉर द पेपर डिस्कशन. ठीक है? ओके सर. ओके सर. ओके, चलो ऑल द बेस्ट बेटा, बी कॉन्फिडेंट और थोड़ा स्मार्टली रिवीजन कर लो. थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स अच्छी तरह से, पेपर बहुत आसान में आएगा, आप लोग को करने वाला ही आएगा, लेकिन फॉर्मूलेस रिमेंबर नहीं हुए ये बात नहीं बोलना चाहिए. तो इसलिए थोड़ा अच्छे खासा जो भी पढ़े वो रिवीजन कर लीजिए आप. ओके सर. ठीक है? हाँ यस सर. हुआ तो रात में भी एक सेशन ले लूंगा मैं पर सब रिवीजन